Before I start, I wanted to know in exercise 5B, question number 4. Have you solved that question? 5B, exercise 5B. Yesterday, nobody asked me any doubt on that 5B. After our lecture got over, I realized that 5B was an important question and nobody asked me any doubt. Exercise 5B, go back and check. 5B, question 4. You got the correct answer? How much answer you got? Good. 72 is the answer and you got 72. Can you send me a solution? Okay, then others also, those who have solved and got 72. Repeat 3 into 3p2 into 3 factorial into 2. Somebody else is saying 3p2 and 2 factorial. Okay, let's see that. Okay, fine, I'll check. I don't remember this question now. Okay, so I can't tell you whether you are right or wrong. 72 is the answer, but the method, okay, how you have solved. 3p2, what was the question? 2 ladies together, okay, so 3p2 you took there. Then what is the next? 3p2 or 3 factorial? Then into 2. Okay, chalo. Anyway. Yes, here combination, I'll go through that combination. Permutation, combination is the name of the chapter. And then combination means selection. Combination means selection. Number of ways of selection of R objects out of n available distinct objects are. First of all, the point to be noted here is it is selection. In permutation, we do arrangement. In permutation, we do arrangement. In selection, here we do selection in combination. And there also it is distinct object. Here also it is distinct object. Object should be distinct, different. Okay. Then formulas we saw. NCR is equal to NPR upon R factorial. So you can say NPR is equal to NCR into R factorial. NCR will give you selection and R factorial will give you arrangement. NCR will give you selection and into R factorial I'll do. Then I'll get what is known as arrangement. R factorial is the arrangement. So that is then this. So what is new here? NCR is equal to n factorial upon n minus R factorial. Till here it is same as permutation. What is extra here is R factorial. Why this? Because in arrangement, order is important. In selection, order is not important and therefore R factorial. Here there is a note also which tells you the order of arrangement of elements is immaterial in combination. The arrangement is immaterial because you have to do just selection. So arrangement is immaterial. Arrangement is immaterial. In combination, AB and BA is same. Whereas in permutation, it is different. Okay. In permutation, it is different. Arrangement is different and selection is different. Let's say from a fruit, I want 2 fruits. I want apple also and I want bananas also. I can buy banana first and then apple, apple first and then bananas. Doesn't make a difference. But if I'm arranging them somewhere on a dining table or somewhere, then arrangement may, if I keep banana first and then apple,
or apple first and banana next, it makes a difference. So selection, order is not important. That is in combination. Okay, order is not important. Whereas in permutation, order is important. Therefore, in permutation, we don't have that R factorial. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot. Second screen, next screen. How many ways 2 boys can be selected? क्या बोला है? Can be selected. Yesterday I read it that selected. In how many ways 2 boys can be selected out of a group of 4 boys? So how many boys are there? 4. And I want to select 2. I don't want to arrange. I want to select 2. So it is NCR concept. So that is the answer. 4C2. Out of 4, I want to select 2. So 4 factorial upon 2 factorial. That is how we got that 2 factorial first. 4 minus 2 is 2 factorial into R is 2, R factorial, that is 2 factorial. So solve it and finally we are getting answer as 6. Okay. Then next, shortcut method, 4C2. Now here 4C2, let me explain the shortcut method once again. This is good for you. What is here? The upper index is 4. To start with 4. Okay. And bottom index is 2. So 2 elements, 2 terms. This 2 terms because of this 2. 4 multiplied by 3. Further, और एक ये जो 2 है इसका फैक्टोरियल दे. Clear? So what we do in permutation we do 4 into 3. That's all. Here extra is your R factorial. Here R is 2. So 2 factorial. 2 factorial means 2. 4 into 3, 12. 12 divided by 2. That is 6. Fast answer you will get. Any doubt? Then few more examples with shortcut. 6C2. 6C2. So start with 6. 6 into 5. 2 terms. Divided by 2 factorial. The next. 9C3. 9C3. 9 and 3. So 9 into 8 into 7. Upon R is 3 here. So 3 factorial. And answer is 84. 3 factorial is 3 into 2. Then NC0 is 1. NP0 is also 1. Combination and permutation. NC1 N and NP1 is also N. You can solve by formula and you'll get the answers. NCN is 1. NCN is 1. Whereas NPN is N factorial. So don't make mistake here. NCN, if you want NCN, how it is 1. So you can take that formula. NCN. Let me write here. N C N. In the formula terms I'm writing is equal to what it says first, N factorial. N factorial upon N minus N. R is N here. N minus N is 0. 0 factorial is how much? 0 factorial. N minus N is 0 factorial into R factorial. R means down. Down index is N. Lower index is N. So upon N factorial. How much is 0 factorial? 0 factorial is equal to 0. No, 1, nah? 1. So what happens? Instead of the 0 factorial, it becomes 1. And then N factorial gets cut. The final answer is 1. Whereas in NPN, it is N factorial because it is
n factorial upon n minus r, which is 0. ये आएगा नहीं उसमें, p में ये आएगा नहीं पार्ट. Clear? Next, this last rule, be careful. NCR, yesterday I explained also you. NCR is equal to NCn minus R. Here, I'll discuss few more cases. Just look at it. Very important. Please pay attention, everyone. What I'm explaining now is important. Here, in this example, see upper index is 9. Upper index is 9. And lower index is 7. Now, upper index minus lower index, that is 9 minus 7, it comes to 2, a smaller number. So always it's better to have this n C2. Answer will be the same. N C2. From where I got this 2? This 2 I got from this 9 minus 7. This 9 minus this 7. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Is equal to 2. Then solving become easier. When you should do, if you are getting small. Suppose now here, take an example. 9 C3. What is the upper limit? Upper limit is 9. Lower limit is 3. 9 minus 3, 6. It is becoming bigger than this. Then don't go for shortcut or don't change it. Keep it as it is. This is better. Solving this is easy. Definitely 9C3 is equal to, according to that last property, 9C, 9 minus 3, that is 6. But solving this is difficult than the earlier one. Lower index should be small. So always keep on checking the lower index you are getting small. If lower index is small, better. If lower index is bigger, subtract and check whether you are getting smaller one. Is that clear? Any doubt before we go on to the sums? समझा क्या बोला मैंने? लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स को माइनस करके देखने का. माइनस करके अगर अपना नंबर छोटा आता होगा सो चेंज इट. अगर बड़ा आ रहा है तो डोंट चेंज. Most important is the last one. One sec. Yes, if you want to take a screenshot, you can take screenshot. Important is this. Very often I'll be using this. Solution easy हो जाता है. Solving becomes easier. Nothing else. करना ही चाहिए क्या? No. You can solve by NCR also. Calculation बड़ा हो जाता है. With NCR, N minus R, if you use that, then it becomes easier calculation. Let's go on to the next one. In how many ways can a team of 4 boys and 4 girls be selected out of 6 boys and 5 girls? So, how many total boys are there? How many total boys are there? 6. 6 boys. Girls में बाद में आते हैं. 6 boys. Out of that, you want to select how many boys? You want to select 4 boys. You don't want to arrange. Okay. Team can be selected.
team can be selected. So that tells me I have to use combination. Okay, initial sums है तो समझा रहा हूं. ये क्या हो गया, this portion, इतना ही portion क्या हो गया, 6C4. देखो इसको शॉर्ट में करेंगे तो इसको कन्वर्ट करो, 6 minus 4 कितना हो रहा है, 2. 2 is smaller than 4, so better, so that is equal to 6C2. समझा क्या किया मैंने, बॉयज के लिए किया. एनी डाउट यार, एनी डाउट? No doubt, right? Next. Now let's come to girls. These are boys are selected. Boys and girls. You want to select team of boys and girls. So and 4 girls out of 5 girls. Girls में total 5 are there. So क्या हो जाएगा वो? 5C4. The moment you write this, say, check the equation. 5 minus 4 is 1. So it is becoming smaller than lower index. Go for it. So this is nothing else but 5C1. Now let's do this. 6C2. कैसा करने को बोला है? 2 टर्म्स लिखना है. 6 multiplied by 5. 6 multiplied by 5 divided by r कितना है, 2. 2 factorial. 2 factorial is 2. आएगा आंसर करने को, कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो ये 2 कैंसिल हो गया और इधर 3 आ गया. आंसर इज 15. 3 5 जा 15. और इधर एक करो कि डायरेक्ट आंसर आएगा आपको. 5 ही लिखना है, सिंगल टर्म ही लिखना है. 5 1 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1. सो फाइनल इट इज 5. तो ये दो में क्या करो, एडिशन करो या मल्टीप्लीकेशन करो? रूल सिखाया आपको इन दिस, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. 15 एंड 5 के बीच में एडिशन करो या मल्टीप्लीकेशन? मैंने सॉल्व करते समय कुछ बोला था? यस, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन. करेक्ट सभी हो, मल्टीप्लीकेशन. व्हाई? एंड वर्ड वाज देयर, एंड बॉयज एंड गर्ल्स, एंड मींस मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करो. 15 5 जा 75. सो फाइनल आंसर इज 75. समझा? प्रिंटेड आंसर आएगा, और करके बताया मैंने आपको. एनी डाउट? एनी डाउट? इधर आएगा, प्रिंटेड आंसर आएगा. आउट ऑफ 6 बॉयज वी हैव टू सिलेक्ट डाक किया मैंने 4 बॉयज. सो 6C4 ये अपना आया 6C4. फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई किया. अब 6C4 सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 6C4 का आंसर भी कितना आने वाला है, 15 ही आने वाला. एंड फ्रॉम 5 गर्ल्स वी हैव टू सिलेक्ट 4 गर्ल्स. सो 5C4. 5C4 देखो, इधर अपना भी 5C4 था ना रे. देखो इधर 5C4 था, फिर उसको सॉल्व किया, 5 आंसर आ गया. अब इधर करूंगा सॉल्व. देखो 6C4 को क्या किया, 6C4 को 6C2 कर दिया मैंने, एंड 5C4 को 5C1 कर दिया. आंसर 6 into 5 divided by 2 into 5, that is 75 is. Clear? Any doubt? Next. In how many ways can a team of 4 boys, 4 girls be selected out of girls be selected? क्वेश्चन पढ़ते समय भी इनिशियली तो मैं समझा रहा हूं, आगे मैं नहीं बताऊंगा, फिर गलती करोगे, बोलना नहीं मेरे. क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड. सिलेक्टेड ने मेरे को बता दिया इधर कॉम्बिनेशन करना है, परम्यूटेशन नहीं करना है. परम्यूटेशन इज डन फॉर अरेंजमेंट. से मेरे को बता रहा है कि मेरे को कॉम्बिनेशन करना है. आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स,
हमको चाहिए टीम में 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. इफ अ पर्टिकुलर बॉय, फर्दर कंडीशन भी है, इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, पर्टिकुलर, इधर एक लड़के का और एक लड़की का झगड़ा हो गया है, अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल. टोटल बॉयज कितने अपने पास? टोटल बॉयज 6 है एंड 5 गर्ल्स. आउट ऑफ 6 बॉयज 1 बॉय और 1 गर्ल का झगड़ा हो गया. ये दोनों एक टीम में नहीं खेलना चाहते, झगड़ा हुआ है, झगड़े हुए लोग एक साथ नहीं खेलना चाहते. ओके, सो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले मैंने लिखा है इधर B1, B2, B3, B4, B5, B6. क्या लिखा है? बॉयज 1 to 6 बॉयज है ना अपने पास, वो लिखा. गर्ल्स लिखता है इसके बाद. अभी इनमें से एक कोई भी एनी टू यू मे सेलेक्ट एनी 1 बॉय एंड 1 गर्ल, झगड़ा है ना, यू मे सेलेक्ट दिस 2, चलेगा. अदरवाइज यू मे सेलेक्ट दिस 2, दोनों नहीं करना है का, और यू मे सेलेक्ट दिस 2, एनी 2, और यू मे सेलेक्ट दिस 2. कोई भी दो, एक लड़का और एक लड़की को आपको सिलेक्ट करना है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में झगड़ा है. ओके, तो नाउ आई एम शोइंग हियर विद अ ब्रैकेट, ब्लैक ब्रैकेट. कोई भी दो चलेगा. मैंने इधर B1 एंड G1 लिया, एनी 2 यू कैन. ओके, सो इफ B1 इज इन द टीम, B1 और G1 में झगड़ा हुआ है, इफ B1 इज इन द टीम, कैन G1 बी इन द टीम? अगर आपने टीम में B1 अच्छा खेलता है इसलिए B1 को टीम में लिया, अब आप G1 को ले सकते हैं टीम में? नहीं, बिकॉज दैट्स अ क्राइटेरिया. दैट पर्टिकुलर बॉय जिसको बॉक्स बनाया वो एनी बॉय एंड एनी 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल यू कैन सिलेक्ट. आई हैव सिलेक्टेड B1 एंड G1 फॉर एग्जांपल. तो जब B1 टीम में है तो G1 नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो. अगर टीम में G1 को लिया तो क्या B1 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना. और एक केस बनता है. तो एक क्या है? B1 को टीम में लो, G1 को इग्नोर करो, क्योंकि B1 अच्छा खेलता है, B1 को ले लो, G1 को इग्नोर करो. उल्टा केस, G1 बहुत अच्छी खेलती है, G1 को ले लो टीम में, और अभी B1 को इग्नोर करो. और लास्ट केस, B1 एंड G1 में झगड़ा है, तो इनको कंसीडर ही मत करो. इनको टीम के टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे कंसीडर ही मत करो, बाजू में बिठा के रखो. तुम लोग में झगड़ा है, टीम में नहीं, ना B1 ना G1. कितने केसेस बोले मैंने? हाउ मेनी केसेस आई सेड जस्ट नाउ? टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4. कितने केसेस बताए? सोच के जवाब दो. 3 केसेस बताए. क्या बताया? पहला, B1 इन द टीम बट G1 इज नॉट इन द टीम. ओके. सेकेंड, G1 इन द टीम, B1 is not in the team. And the third case, both not in the team. Now let us consider B1. इधर आएगा, प्रिंटेड आंसर आएगा, बट उसके पहले जैसा मैंने अभी आजकल सिखाता हूँ, बताता हूँ ऐसा. अगर आपने B1 को सिलेक्ट किया ऑलरेडी, B1 बहुत अच्छा खेलता है, B1 को आपने सिलेक्ट किया. अगर आपने B1 को सिलेक्ट किया तो एक बॉय तो सिलेक्ट हो गया. एग्रीड? बॉयज टोटल कितने बॉयज लेने हैं? A team of 4 बॉयज. उसमें से B1 को तो आपने सिलेक्ट कर लिया, तो B1 तो टीम में आ गया. अब कितने बॉयज और लेने हैं आपको?